He's saying explain the combustion of butane is exothermic. Explain in terms of bond making and bond breaking. Why this reaction is exothermic? So these are the frequent questions जिसमें वो पूछता है कि एक्सप्लेन कर दो whether reaction is endothermic और exothermic. तो इसका आंसर मैं लिखवा देता हूँ. आप हमेशा यही होता है कि कोई भी रिएक्शन हो, अगर वो एक्सोथर्मिक है तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी सेम होगी, अगर वो एंडोथर्मिक है तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी सेम होगी. We know at the reactant hand side bond breaking takes place. So heat energy is always absorbed during bond breaking, whereas heat energy is always released during bond making. So if heat energy absorbed during bond breaking is less than heat energy released during bond making, such a reaction is known as exothermic reaction. ऐसा ही है ना? Yes, sir. आ देता हूँ आंसर आपको. Heat energy absorbed during bond breaking of reactants is less than heat energy during bond heat energy released during bond making in products. सही है? आगे बढ़े. एक सेकंड सर. Sir, can you just wait 1 minute? I just need to finish copying. Is that okay? जी sure. By the way, sir, the notes are in your drive. Yes, on Google Classroom. चले आगे. ये सब मेरा हो गया. अच्छा, क्वेश्चन 2 में कह रहा है रेस्पिरेशन इज अ रिएक्शन that takes place in a living cells to release energy. And if in any reaction energy is being released, it means it must be an exothermic reaction. आगे लिखा हुआ भी है, इसकी इक्वेशन भी दी हुई है, रिएक्टेंट्स भी शो किए हुए हैं, प्रोडक्ट भी बताया हुआ है. द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स. Reaction is exothermic. Draw an energy profile diagram for respiration using the axis shown. Label the axis, enthalpy change, and the reactants and the products. So you have to label the axis. On x-axis, we label progress of a reaction. On y-axis, we have enthalpy. अच्छा, enthalpy का unit भी लिखना, which is kilojoule per mole.
And for an exothermic reaction, reactants are at a higher energy level than the products. So we'll make reactants at a high energy level and the products are at a lower energy level. रिएक्टेंट्स, अच्छा अब इसमें ना रिएक्टेंट्स हमें गिवन है, तो हम ना डायरेक्ट रिएक्टेंट्स का जो फॉर्मूला गिवन है ना, सारे रिएक्टेंट्स उठा के लिख देंगे. जैसे वी हैव C6H12O6 एंड पूरी इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट की जगह पे लिख दो और जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट की जगह पे लिख दो. 6 moles of carbon dioxide and 6 moles of water. And you can also draw a profile curve which is like this for an exothermic reaction. इंथैल्पी चेंज देखो एक्सिस लेबल कर दिए, उसने जो जो बोला हुआ है इंथैल्पी चेंज as it is an exothermic reaction, so enthalpy change should be negative like this from reactant to product, arrow pointing downwards. Enthalpy change should be negative and reactants and product we have already written. Then you will get 3 marks for it. Clear है? जी सर. आगे बढ़े या जी. कॉपी कर लो बल्कि ना. आगे बढ़े. जी सर कर लिया. ओके. अगेन इट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस इसमें फर्क क्या है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है, उन्होंने अपोजिट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड दे हैव टोल्ड अस दैट इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो ये एंडोथर्मिक है, सब कुछ वही करना है, एक्सिस भी आपको लेबल करना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी दिखाना है इसमें, और आपको एंथैल्पी चेंज भी दिखाना है इसमें. बस फर्क क्या है कि this time it is an endothermic reaction, तो reactant should be at a lower energy level than the products. तो reactant नीचे होंगे, product जो है उसमें ऊपर होंगे. reactants हमारे पास इस बार 6 moles of carbon dioxide and 6 moles of water है, और product में हमारे पास we have 1 mole of glucose which is C6H12O6 and 6 moles of oxygen. Profile इसका इसी तरह से बनेगा like this, और enthalpy change is positive, so it should be arrow pointing upwards like this. Done. सेकंड सर. हो गया सर. Okay. Moving on. Wait, sir. अच्छा Can I question. just take a screenshot?
Yeah, sure. Sir, can you move a little down? Down or up? Because that's enough. Done. Done. Okay. As a question, question 4 though is not related to this chapter, but question 5 is explain how catalyst speeds up rate of a chemical reaction. So catalyst, ये भी हमने अभी नहीं पढ़ा, ये हमारा next chapter है rate of a reaction का. We know that catalyst speeds up a rate of a chemical reaction by decreasing the activation energy of a reaction. आगे भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस तो किया ना कैटलिस्ट को, तो यहीं पे याद कर लो तो बेटर हो जाएगा. तो कैटलिस्ट speeds up the rate of a chemical reaction by decreasing activation energy of a reaction. आगे बढ़े. ठीक है सर. Just screenshot. Thank you. Done. Done. Okay, question 6 में part 1 में explain in terms of bond breaking and bond forming why this reaction is exothermic, that we have already discussed. Okay, you can also write your answer in this way. Usually in marking keys they give separate points. हमने तो मिला के लिखा हुआ है ना, but they write it in this form as well. वो भी मैं लिखवा देता हूँ आपको. They always say bond breaking is an exothermic reaction. Sorry, bond breaking is an endothermic reaction. या इसको इस तरह से लिखो. Heat energy is absorbed during bond breaking and heat energy is released during bond making. In an exothermic reaction, more heat energy is released during bond making than heat energy absorbed during bond breaking.
Done, sir. सबका हो गया, आगे बढ़े एक सेकंड। जी। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन 2 में कह रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट्स 185 किलोजूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. Calculate the amount of energy released when 106.5 gram of chlorine reacts. अच्छा, equation is given, and as per this equation, when 1 mole of chlorine is reacting, so how much heat energy is being released, which is minus 185 kilojoule per mole, which is the enthalpy change of this reaction. And he is inquiring if we have 106.5 gram of chlorine, so how much energy will be released. So we have to know the mass of 1 mole of chlorine. And mass of 1 mole of chlorine would be equals to molecular mass of chlorine, right? 1 मोल के किसी भी मॉलिक्यूल का मास उसके मोलिकुलर मास के इक्वल होता है ना. So if you want to find the mass of 1 mole of chlorine, instead of saying 1 mole of, because in the question they have given mass of chlorine, or you can do this question like this as well कि अगर मैं इक्वेशन देखूं तो 1 मोल chlorine gas releases minus 185 kilojoules of energy, right? साइन यूज करने की जरूरत नहीं है, वैसे सिर्फ 185 लिख लो अभी क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हो. अच्छा, 106.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के मोल्स कितने होंगे? इफ वी फाइंड आउट द मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस और 106.5 ग्राम, तो फॉर्मूला है ना नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एमआर. क्लोरीन का एमआर कैसे निकालेंगे? क्लोरीन गैस का फॉर्मूला है Cl2. यहाँ 2 क्लोरीन, yes, atomic mass of chlorine is 35.5 gram, so this is equals to 71 gram. So number of moles find out करने के लिए we know the mass given 106.5 gram and MR is 71 gram. So the moles of 106.5 gram of chlorine would be equals to 1.5 moles. So when 1 mole of chlorine is reacting, 185 kilojoules of heat energy is released. लेकिन जब 1.5 मोल ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी? When 1.5 mole of chlorine reacts, how much heat energy is released? That would be x. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम जैसे मोल्स में करते थे. x into 1 and 1.5 into 185. So x is equals to 1.5 into 185, and this would give us 277.5 kilojoules. So heat energy released is 277.5 kilojoules. इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ लो. नाफे, बिलाल, दानियाल, विशाल, हिबा, मूसा, समा, उजैर, एवरीवन, फातिमा. क्लियर है सबको ये? जी सर. जी सर. पक्की बात है?
Sorry, I didn't understand it, but I know it's my fault because I joined it late. Like I joined these classes late, so at this point you can't really do anything. So I'll have to check to catch up. Okay, you have to watch moles classes first. Moles की classes आपने देखी हैं अभी तक? So I did watch them, but I didn't understand them fully. It was really just gaps. Okay, it's okay. Leave it for now. Leave it for now. अभी पे ये वाले chapter पे focus करो. Leave the moles part. वो हम बाद में कर देंगे. Because इसकी knowledge सारी moles के chapter से आ रही है ना. आगे बढ़े, लिख लिया सबने? जी सर। Yes, sir. Done? Okay. Done, sir. Okay. अच्छा, 7 आपका होमवर्क है, बिल्कुल वैसा ही है. 7 हो गया क्वेश्चन. बॉन्ड ब्रेकिंग के टर्म्स में एक्सप्लेन करो व्हाई द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. क्वेश्चन 8 इज अगेन सिमिलर वन. ये भी आप होमवर्क करोगे. क्वेश्चन 8 का पूरा पार्ट. क्वेश्चन 9 भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, ये भी हमने देख लिया है, ये भी आप होमवर्क में करोगे. क्वेश्चन 10 भी होमवर्क में करोगे. Calm down. क्वेश्चन 11 का पार्ट भी हम एक और कर लेते हैं ताकि हमारी ना वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए. अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना, फर्स्ट पार्ट इज सेइंग एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. समटाइम्स ही यूजेस द वर्ड बॉन्ड फॉर्मिंग एंड समटाइम्स ही यूजेस द वर्ड बॉन्ड मेकिंग. दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है. आप कोई भी जो क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है उसी को यूज कर लेना आंसर लिखते वक्त. नाउ लेट्स डू पार्ट बी. पार्ट बी पहले अगर आप खुद ट्राई करो देन विल सॉल्व. And the question is saying when 1 mole of methanol is formed, 91 kilojoule of energy is released. Calculate the amount of energy released when 160 gram of methanol is formed. So as per the equation, methanol is CH3OH, and when 1 mole of methanol is formed, energy of 91 kilojoules is released. So right now we are given the mass of methanol. We'll convert it into moles of methanol. Moles कैसे निकालेंगे? Number of moles, mass over MR. Mass of methanol is 160 gram. MR of methanol, you do not have to work it out. It's already given in the question, which is 32. So moles would come out to be 5 mole. As per the equation, when 1 mole of methanol is formed, energy of 91 kilojoules is released. So when 5 mole of methanol is formed, how much energy would be released? We'll just cross multiply it. X into 1, 5 into 91. So this would give us 455 kilojoules. सही है? ओके सर. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. जी सर. ओके, ये वाला क्वेश्चन भी ये भी आप खुद करो अभी. चलो, क्वेश्चन 12. Is the answer 1310? Yes, Let's because go. first you have, they are saying when 1 mole of hydrogen is formed, 131 kilojoule of energy is absorbed. This time it is the heat energy absorbed. It doesn't matter, the working will stay same. Now he is asking calculate the amount of energy absorbed when 240 decimeter cube of hydrogen measured at room temperature and pressure is formed. So we have to convert this volume of hydrogen given into moles. And we know that 1 mole of any gas, right now the gas is hydrogen gas. So 1 mole of any gas occupies a volume of 24 decimeter cube.
Right now, the volume of hydrogen gas is 240 decimeter cube. So how many moles would be there in 240 decimeter cube of hydrogen gas? Just cross multiply it. देखो 1 मोल का 24 डेसीमीटर क्यूब है, तो 240 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम रखना है, और उसमें कितने मोल्स होंगे वो निकालने हैं, उसके नीचे एक्स रख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 24, 1 इंटू 240, तो दिस वुड गिव यू 240 divided by 24 means 10 mole. Now, as per the question, is saying that 1 mole of hydrogen producing 131 kilojoule of energy. When 1 mole of hydrogen is formed, 131 kilojoule of energy is absorbed. Right now, how many moles of hydrogen is formed? They gave you the volume. You have converted that volume into moles, which is 10 moles. So when 10 mole of hydrogen is formed, how much heat energy is absorbed? That is x. Cross multiply it, x into 1 and 10 into 131. So this would give you 1310 kilojoules. आ गया समझ सबको? सर एक और क्वेश्चन है सर। जी बहुत सारे हैं जी, लिख लो, मैं दिखा दे और करवा देता हूँ। Done. डन? जी सर। Yeah. Okay. ओके, ये दोनों कर लो, एक वॉल्यूम वाला भी करवा देता हूँ। पहले इन दोनों के आंसर बताओ। This question is saying that reaction is endothermic, and by looking at the equation, we can see when 1 mole of carbon monoxide is formed, the energy absorbed is 210 kilojoules, right? Because equation में 1 mole of carbon monoxide है, और question में 560 gram of carbon monoxide दिया है। Calculate the energy absorbed by the reaction when 560 gram of carbon monoxide is formed. So we have to convert the mass into moles. Again, we'll use the same formula, number of moles mass over mr. 560 divided by 28. Yes. Carbon monoxide का mr कैसे निकालेंगे? In carbon monoxide, we have 1 carbon into 12. Oxygen is 16 into 2. This is equals to 28. Sorry, not 2. 16 into 1. We have 1 oxygen in the formula. So the mr is 28 grams. Number of moles is 560 over 28. 28. ये कितने आ रहे हैं? 20 moles. And we know by the equation that when 1 mole of carbon monoxide is formed, heat energy absorbed is 210 kilojoules. Right now we have 20 mole of carbon monoxide, so heat energy absorbed would be x. So this is x into 1, 20 into 210, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ रहा है 4200 kilojoules. अच्छा, क्वेश्चन 16 अभी आप, ये इनकम्प्लीट है, ये आप नहीं कर सकते हो, इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है पूरी, वो कट हो गया गलती से। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया ये? Yes, sir. But sir, how do we do see? Oh, it's cancelled. दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, ये गलत अटैच्ड हो गया है, मतलब ऊपर की इंफॉर्मेशन कट हो गई है इसमें, तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट डू इट। मिस प्रिंट है इन शॉर्ट। चलें आगे।
अब इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कोई डिफरेंट क्वेश्चन अब है नहीं कराने के लिए, बस बाकी जितने क्वेश्चंस बचे हैं इस फाइल में फिर वो आप एज अ होमवर्क करोगे। ओके सर। ठीक है, अच्छा वी हैव टाइम राइट नाउ, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करें क्या?